Hello students, in the last video you have learned the importance of kinematic equations and its derivations. Today I am going to derive the equations of motion for constant acceleration using method of calculus. So the three equations of motions are v is equals to u plus at. Second equation is s is equals to ut plus half at square. Third equation is v square is equals to u square plus 2as. So let's start. Derivation of first equation of motion, that is v is equals to u plus at. Here v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. We know that the acceleration is defined as the rate of change of velocity with time. We can also write dv is equals to a dt. Give this equation number 1. Now let us suppose that when time is equals to 0, then the velocity is u. When time is t, then the velocity is v. Give this equation number 2. Integrating equation 1 within the above limits as given in the equation 2. That is integration of dv, lower limit is u, upper limit is v, is equals to integration of a dt. लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया है. सो dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v और लिमिट्स दी हुई हैं तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया हमने तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt लिमिट 0 टू t. अब इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लिमिट्स को पुट करेंगे, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a इंटू dt का इंटीग्रेशन होगा t लिमिट 0 टू t. इस इक्वेशन को लिखेंगे हम v माइनस यू इज इक्वल्स टू a, लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज v माइनस यू इज इक्वल्स टू at और v इज इक्वल्स टू u प्लस at. Give this equation number 3. This is the first equation of motion. Let us go ahead and proceed further. Derivation of second equation of motion. S is equals to ut plus half at square. Here S is the displacement, u is the initial velocity, t is the time and a is the acceleration. We know that velocity is defined as the ratio of the change in displacement to the time taken, that is v is equals to ds by dt. इस इक्वेशन से ds हो जाएगा v इंटू dt. इक्वेशन 3 का यूज करके v के वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो ये होगा ds इज इक्वल्स टू u प्लस at इंटू dt. गिव दिस इक्वेशन नंबर 4. नाउ लेट अस सपोज दैट व्हेन टाइम इज 0 देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 and when the time is t then the distance traveled is s. Give this equation number 5. Now integrating equation 4 within the above limits as given in equation 5, that is integration of ds limit 0 to s is equals to integration of u plus at into dt लिमिट 0 टू t. इस इक्वेशन को
हम अलग करके लिखेंगे ताकि इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इक्वेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस लिमिट 0 to s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी लिमिट 0 to t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी इंटू डी टी लिमिट 0 to t। जब हम ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा s लिमिट 0 to s इज इक्वल टू u कांस्टेंट है तो u को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा dt लिमिट 0 to t प्लस a कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर कर लिया, ये हो जाएगा t dt लिमिट 0 to t। लेफ्ट साइड में हम लिमिट्स पुट करेंगे, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा t लिमिट 0 to t प्लस a इंटू टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 एंड द लिमिट इज 0 to t। सो s इज इक्वल टू u इंटू लिमिट्स पुट करेंगे, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a इंटू लिमिट्स पुट करेंगे, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। We can write displacement s is equals to ut plus half at square. Give this equation number 6. This is the second equation of motion. Let us now have a look at third equation of motion, that is v square is equals to u square plus 2as, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s is the displacement. We know that acceleration, that is a is equals to dv by dt। इस इक्वेशन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ds से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a is equals to dv by ds into ds by dt। ds by dt होता है वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv by ds into v। सो इक्वेशन से हम लिख सकते हैं a ds इज इक्वल्स टू v dv। इसे दे दें इक्वेशन नंबर 7। नाउ लेट अस सपोज दैट व्हेन time is 0, then the velocity is u and distance traveled is 0, and when the time is t, then the velocity is v and distance travel is s। Give this equation number 8। Integrating equation 7 within the above limits as given in the equation 8, that is integration of a ds limit 0 to s is equals to integration of v dv limit u to v। a कांस्टेंट है तो a को हमने बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds लिमिट्स 0 to s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv लिमिट u to v। ds का इंटीग्रेशन होता है s, दैट इज a इंटू s लिमिट 0 to s इज इक्वल्स टू v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाय 2 लिमिट u to v। अब हम लिमिट्स पुट कर देंगे, दैट इज a इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू, इसमें भी हम लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट है v, दैट इज v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट है u, तो हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। गिव दिस इक्वेशन नंबर 9। This is the third equation of motion.
The advantage of this method is that it can be used for motion with non-uniform acceleration also. Okay. Now, what do you mean by motion under gravity? Whenever an object is released near the surface of the earth, then it is accelerated downward under the influence of the force of gravity. In the absence of air resistance, all the object falls with the same acceleration near the surface of the earth, and this motion of an object falling towards the earth from a small height is called free fall. The acceleration with which an object falls is called acceleration due to gravity, which is denoted by g. Near the surface of the earth, the value of g is equals to 9.8 meter per second square. Now we have to write the equations of motion for a freely falling body. You all know the three equations of motion. So for a freely falling body, we have to replace acceleration by g. Okay. So let's write it. First equation of motion, that is v is equals to u plus gt. Okay. Second equation of motion, s is equals to ut plus half gt square. And the third equation of motion is v square is equals to u square plus 2gs. Okay. Now, whenever a body falls freely under the action of gravity, its velocity increases and the value of g is taken positive. Means कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है अगर वो फ्री फॉल कर रही है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और इस केस में हम g की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. क्लियर? नाउ when a body is thrown vertically upward, its velocity decreases and the value of g is taken negative. It means that when an object is thrown vertically upwards, then its velocity decreases and the value of g is considered as negative. Right? When a body is just dropped, in case of just dropped, we take the value of initial velocity of the body, that is u is equals to 0. Okay? Acceleration due to gravity, that is g, always acts downward whatever the direction of motion of the body. Okay? I hope it is clear to you. In the next video, we will solve some numericals based on it. That's all for today's session. Thank you very much.